Hello students, today we discuss the question what is sex linkages, explain the linkages, sex linked characters and add a note on sex linked inheritance with example hemophilia. So let's start. What is first of all you know about the linkage? The linkage is on the chromosomes. Genes are present wherever the chromosome goes from parents to offsprings. Parallelly, genes are also goes from parents to offsprings. The tendency of genes to inherit along the chromosomes on which they are present is known as the linkages. हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी किया है. क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं और जब भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं तब क्या होता है, जो पेरेंट्स के क्रोमोसोमल जो भी क्रोमोसोम है वो ऑफस्प्रिंग में वही क्रोमोसोम चले जाते हैं. तो जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स में प्रेजेंट रहेंगे वही कैरेक्टर्स वही जीन्स ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट रहेंगे. सो द टेंडेंसी ऑफ जीन्स, जो जीन की टेंडेंसी है टू इनहेरिट अलोंग विद द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के साथ जो भी उनकी टेंडेंसी है विच इज़ नोन एज द लिंकेज. द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट अलोंग विद द क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम के साथ जो भी जीन्स है वो जीन क्या होते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स कैरी होते हैं. सो दिस टेंडेंसी इज नोन एट द लिंकेज. क्लियर. जो भी जीन्स, जो भी क्रोमोसोम और जीन्स दैट आर इनहेरिटेड, क्या होता है कि जो जीन्स पेरेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं और क्रोमोसोम जो पेरेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं वही ऑफस्प्रिंग में हमें दिखाई देते. सो दैट टेंडेंसी इज नोन एज द linkages. So next is the types of linkages. There are two types of linkages depending on the types of chromosomes. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2 टाइप्स के क्रोमोसोम मिलते हैं, तो एटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम. सो इन अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम है वैसे ही लिंकेजेस के भी 2 टाइप्स है, एटोसोमल लिंकेजेस एंड सेक्स क्रोमोसोम लिंकेजेस. जो एटोसोमल क्रोमोसोम से जो भी कैरी होंगे वो रहेंगे एटोसोमल लिंकेजेस, और जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके ऊपर जो भी जीन्स कैरी होंगे वो रहेंगे सेक्स क्रोमोसोम लिंकेजेस. नेक्स्ट, फर्स्ट इज द सेक्स लिंकेजेस. इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ लिंकेजेस टू इनहेरिट अलॉन्ग द सेक्स क्रोमोसोम on which they are present is known as sex linkages. जो भी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे वही वो किसके साथ कैरी होंगे, सेक्स क्रोमोसोम के साथ. जो भी सेक्स जीन्स है वो सेक्स जीन्स इज कैरिड आउट और कैरी और इनहेरिट with the sex chromosomes from parents to offspring, that is the sex linkages. जो भी सेक्स लिंकेजेस सेक्स क्रोमोसोम के साथ जो भी जीन्स इनहेरिट होंगे दैट इज द सेक्स लिंकेजेस. सो देयर इज अगेन 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इट कैरीज 2 different linkages, X chromosomes and Y chromosome. In X chromosome it is metacentric, and then in X chromosome there is the 2 portion. One portion carried out X linked genes and another portion carried out XY linked genes.
Similar way in Y chromosome also there is the two regions. In this one portion is carried out Y linked genes and another portion that is carried out XY linked genes. Then the genes linked with X chromosome called as the sex-linked genes. Then the characters controlled by sex-linked genes is called as sex-linked characters. So there are three types of sex linkages जो हमने फिगर में देखा कि एक्स लिंक्ड जीन्स है और कैरेक्टर्स एक्स वाई लिंक्ड जीन्स है एंड वाई लिंक्ड जीन्स. तो commonly in X chromosome and Y chromosome XY linked genes are common, but there is the difference. In X chromosome there is the X linked genes is present and Y chromosome Y linked genes is present. So the characters controlled by this gene is called as the sex linked characters. So next move towards the sex linked inheritance. So in X linkages the inheritance pattern is like crisscross. That means parents or parents to the or mother to the son, son to the daughter. That is crisscross inheritance are observed in these X linkages. Examples of these X linkages are the hemophilia, color blindness in human being. This is hemophilia and color blindness. These are those sex-linked inheritance are observed. Then Y linkages inheritance, it is straight line. That is mother to straight line means every generation these characters or linkages are observed. The example is the hypertrichosis. That means हेयर ऑन द पिन्ना, जो हमारे ईयर रहते हैं उनके ऊपर कुछ लोगों के हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं. सो दिस इज द characters of Y linkages which is carried from straight. That means it goes characters from each generation. Here X links में क्या होता है, यदि मदर में है तो उनके सन में फिर वो कैरेक्टर्स नहीं दिखते, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वहाँ पे कैरेक्टर्स रहते हैं. देन इन एक्स वाई लिंकेजेस इट इज़ एटोजोमल. So this is autosomal type of inheritance. So it is example is the eye color of Drosophila. So autosomal means it is present on the autosomal chromosomes. These two are present on these X or Y chromosomes or depending on this chromosome. Then we see the one by one example. First we looking the hemophilia. That is the it is also known as the bleeder disease because it is also known as the Royal's disease. Royal disease means in the royal family, the royal families are affected by the disease hemophilia. That's why the disease is also known as the royal disease. On the what's happening in case of this hemophilia, so the hemophilic patient prevent to fetal death because the blood not clot after the injury. The patient has to suffer bleeding continuously. Therefore, the disease is known as the bleeder disease.
इन केस ऑफ हीमोफिलिक पेशेंट क्या होता है कि जब कोई इंजरीज वगैरह हो जाता है तो जनरली क्या होता है कि नेचुरली हमारे ब्लड में क्लॉटिंग सिस्टम है, तो नेचुरली वो ब्लड क्लॉट होने शुरुआत होता है, लेकिन इन क्लॉट होता है इसलिए वहाँ पे ब्लडिंग स्टॉप होता है। लेकिन इन केस ऑफ हीमोफिलिया पेशेंट क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है और कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो जाता है। सो ड्यू टू दिस इंजरी डेथ हो जाती है। दैट्स वाई दिस डिसीज इज known as the bleeder disease. In this disease, continuously bloodings are noticed. That's why this disease is known as the bleeder disease. So, this disease is a genetic disorder. So, it is controlled by the H genes. The genes is present on X chromosome, therefore hemophilia is the X-linked character. So, this hemophilia disease is जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जीन्स के कारण ही होता है। दिस इज द नो एनी रीजन ऑफ दिस डिसीज, ओनली द जेनेटिक कैरेक्टर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो दिस hemophilia controlled by the small h genes. The gene and this gene is only present on the X chromosome. Therefore, hemophilia is X-linked characters. ये जो डिसीज़ है मोस्टली एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स बोलते। सो लेट्स सी हाउ दिस डिसीज आर ऑकर्ड। The next point is the inheritance of hemophilia. So in case of inheritance, it is X-linked. That is why the normal female, the chromosomes are XX and it's capital H, capital H. If the female is carrier, then it's a one capital H and one small h. In hemophilic female, the genotype is X small h, X small h. In normal way male, the genotype is X small h, Y. In hemophilic male, these X small h and Y. That is hemophilia. The hemophilic condition is controlled by the gene small h. That's why in जहाँ पे हीमोफिलिक कंडीशन है वहाँ पे स्मॉल एच आएगा, यदि कैरियर है तो यहाँ पे भी एच आएगा, और जो मेल है ये मोस्टली एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है, तो यदि हीमोफिलिक मेल है तो यहाँ पे हम स्मॉल एच लिखेंगे। क्लियर? देन सी द क्रॉसेस इन द hemophilic mother when crossed with normal father. What's happened? Hemophilic mother, that is the यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनेंगे? एक्स एच स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, और नॉर्मल फीमेल के गैमेट्स बनेंगे एच कैपिटल एच एंड वाई। इन F1 जनरेशन make a chart. Here is the female, it is X small h. In this row it is the male genotype X small h and यहाँ पे Y. Then the cross between in these gametes, the offsprings are formed as like when X H and X small h cross, the offsprings are X capital H, X small h, that is normal daughter. In यहाँ पे X capital H, X small h, that is again normal. Then X small h Y, that is hemophilic son. Here is also hemophilic son. In second cross, in normal mother,
is crossed with the normal father, the gametes are normal father and normal mother and normal fathers. Gametes are X, capital H, X, H. Normal father, there is gametes are X, small h in Y. Then again the gamete formations is taken out. Here is the male, here is the female gametes. The crosses are made and the offsprings are X, capital H, X, small h, that is carrier granddaughter. Here X, H, capital H and X, small h, that is carrier granddaughter. Then in X, A, capital H, Y, that is normal son, and here is the again normal son. So the characters are observed as like in first generation the female is hemophilia. In second generation what's happened, the male son are hemophilic. देन अगेन इन थर्ड जनरेशन क्या हुआ, यहाँ पे जो फीमेल है दैट इज फीमेल्स आर द कैरियर डॉटर्स ऑफ हीमोफीलिया. सो इन दिस वे यहाँ पे हमें फीमेल में मिले, फिर जो सन है सन में हमें कैरेक्टर्स मिले, फिर हमें फीमेल में कैरेक्टर्स मिले. सो दैट्स वाई दिस इज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और झिगजैग इनहेरिटेंस. आर यू क्लियर? एक बार फीमेल में, एक बार मेल में, फिर फीमेल में, इस तरह से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी होता है. सो इन दिस वे दिस हीमोफीलिया इज called as the criss-cross inheritance. Lastly, we shortly concluded that these, पहले हमने देखा कि सेक्स लिंक, जो सेक्स लिंकेजेस है, लिंकेजेस जीन्स आर कैरी विथ दिस क्रोमोसोमल जीन्स. ये लिंकेजेस में क्रोमोसोम के दो टाइप्स है, उसी हिसाब से लिंकेजेस के भी टू टाइप्स मिलते हैं. फिर sex linkages also carry the genes with the sex chromosomes. In that two types of chromosomes, they separately carry two types of different genes. That is, X chromosome carried X genes, X linked genes and XY linked genes, and Y chromosome carried Y gene, Y linked genes and XY linked genes. जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखा, जो एक्स लिंकेजेस में है क्रिस क्रॉस और झिगजैग पैटर्न हमें दिखता है, वाई लिंकेजेस में स्ट्रेट इनहेरिटेंस है, और एक्स वाई लिंकेजेस में एटोसोमल लिंकेजेस और इनहेरिटेंस है. एक्स लिंकेजेस के एग्जांपल से हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, वाई लिंकेजेस का एग्जांपल है हाइपरटाइकोसिया, एंड एक्स वाई लिंकेजेस का एग्जांपल है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला. सो लास्टली हमने हीमोफीलिया डिसीज़ देखा, जो कि उसे अल्सो दिस डिसीज इज अल्सो नोन एज ब्लीडर डिसीज और रॉयल डिसीज. इन दिस हीमोफीलिक पेशेंट क्या होता है, यहाँ पे जब भी कोई इंजरी होती है, जो हीमोफीलिक पेशेंट है, इन दैट केस दिस ब्लड आर नॉट क्लॉटिंग, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, कंटिन्यूसली ब्लड फ्लोइंग होता है, वो जो पेशेंट के वो डेथ हो जाती है. But this disease is the genetic disorders and it's controlled by the H genes. But this H gene is present on the X chromosome. That's why this is the hemophilia is the X-linked characters. फिर हमने क्रॉसेस देखे. पहले क्रॉस में हमने क्या देखा कि हीमोफिलिक मदर का नॉर्मल फादर के साथ क्रॉस किया. वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल डॉटर्स, जो ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल डॉटर्स है, बट जो सन है वो हीमोफिलिक हमें दिखाई देते हैं. बट फिर जब हम क्या करते हैं, नॉर्मल मदर का जो कैरियर और हीमोफिलिक मेल है उनके साथ यदि हम क्रॉस करेंगे, तो जो
F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो ऑफस्प्रिंग्स कैसे रहेंगे, सन तो नॉर्मल सन 50% रहेगा, जो सन नॉर्मल रहेंगे और जो डॉटर्स है वो कैरियर डॉटर्स रहेंगे। सो इन दिस वे जो जनरेशन है वो हमें zigzag पैटर्न में मिलेगा, दैट मीन्स मदर टू और फीमेल टू मेल और मेल टू फिर अगेन फीमेल बाय generation to generation. So today we will stop here. The next part we see in the next video. Thank you.